Hi everyone, welcome back to my channel and to a brand new video which I have been longing to shoot ever since. So a few of you guys have commented on my other videos requesting an answer or a clarification on whether derma rollers are effective for beard growth or not. Well, here I am because in this video we are gonna be talking about derma rollers, basically about whether derma rollers are worth investing in for beard growth or not. So before I start the video, let me get one thing very straight, and that is any information or all the information that I'm going to be sharing with you guys in this video is based purely out of my experience with derma rollers and a few other beard growth tips and products. And I think once you watch this video till the end, you're going to be having a pretty good idea of whether or not derma rollers are actually worth investing in. Also, towards the end of this video, I'm also going to be sharing with you guys 2 या 3 ऐसे tips जो कि बहुत ही effective हैं beard growth के लिए. So if you want to know all about it, make sure कि आप उस video को end तक देखो. Now before I jump straight into giving you an answer on whether derma rollers are actually worth investing in, why not talk about derma rollers in general, जिससे कि आपको idea हो जाए कि derma rollers exactly होते क्या हैं, इनका क्या काम होता है, and all that, which I think is important because you guys need to have a bit basic info about derma rollers before we proceed with the video. So derma rollers are actually based around the concept of micro needling. माइक्रो नीडलिंग का मतलब एक ऐसा प्रोसेस है ये जिसमें रोलर्स के ऊपर टाइटेनियम या स्टेनलेस स्टील के काफी बारीक छोटे नीडल्स को लगाया जाता है स्किन में पियर्स करने के लिए एंड स्किन में जो कोलेजन है जो उसकी प्रोडक्शन है उसको बूस्ट करने के लिए. नाउ कोलेजन एक ऐसा प्रोटीन है which आप कह दो कि हेल्प्स विद स्किन हेल्थ एंड इट आल्सो इज समथिंग व्हिच प्लेज अ मेजर रोल इन द फेशियल हेयर और स्कैल्प के हेयर या एनी काइंड ऑफ हेयर ग्रोथ ऑन योर स्किन. देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ derma rollers अवेलेबल इन द मार्केट. कुछ अलग अलग तरह के डिजाइन और शेप्स में भी अवेलेबल होते हैं. सबके जो यूजेस हैं या वो application है वो थोड़े से differ करते हैं, but all of them are based around the same concept, which is micro needling for a better skin health and to promote hair growth. Now अगर scientifically देखा जाए तो the effectiveness of micro needling, the effectiveness of derma rollers are quite well established for skin health. ठीक है, और कहीं ना कहीं जो हेयर स्कैल्प है, आपके जो सर के ऊपर के बाल हैं स्कैल्प हेयर्स, उसकी भी ग्रोथ प्रमोट करने के पीछे काफी ऐसे प्रूफ्स हैं, काफी ऐसी स्टडीज हैं which support the fact that yes, derma rollers and micro needling help promote hair growth as well. But अगर मैं बात करूं beard की, then there is literally zero to a very little information or studies or proofs on whether micro needling or derma rollers are effective for your beard growth. And personally मैंने भी यूज किया हुआ है derma rollers पहले और मुझे कुछ खास फर्क नहीं लगा, मुझे कुछ खास रिजल्ट्स नहीं मिले अपनी beard growth के रिगार्डिंग. Now इसका मेरा मानना ये है कि भाई देखो, हेयर स्कैल्प जो है उसकी प्रॉपर्टीज हैं, they might be a bit different than the facial hairs that you will have on your face. That might be the one thing. And also beard growth is something which cannot really be affected. It totally depends upon your genetics. It totally depends upon the nutrition you are intaking, the kind of skincare you do and all that. But there are a couple other hacks, there are a couple other products that can help you boost your beard growth. अब इससे आपको एक बात तो पता चलेगी होगी कि भाई माइक्रो नीडलिंग या जो derma rollers हैं वो beard growth में उतने effective नहीं है. चाहे आप कुछ भी कर लो, कितने भी लंबे समय तक यूज कर लो या किसी भी फॉर्म में टेक्निक में यूज कर लो, derma rollers are not much effective for beard growth, and this is the harsh truth. Lekin as I said, there are other tips, there are other products that you can use to promote your beard growth. उसमें से पहला है use minoxidil. Now the benefits and the effectiveness of minoxidil to promote beard regrowth या beard growth या even to make your beard denser, fuller and richer, the proof, the studies, there are a lot of them to support this fact. And minoxidil मैंने भी personally use किया है बहुत सालों से, बहुत महीनों से, and I can say this कि भाई minoxidil really helps with beard regrowth या hair regrowth on your scalp as well. So if you have bought a roller already, a derma roller already, then don't worry, आप minoxidil लो और derma roller के साथ जो आप करोगे micro needling, उसके साथ आप minoxidil को यूज करो, because इससे क्या होगा कि minoxidil आपकी जड़ों तक पहुंच पाएगा और beard growth काफी रिच होगी. But if you are someone जिन्होंने अभी तक roller नहीं लिया है, don't worry about it, don't invest in one, just get yourself a minoxidil and you are sorted. Now there are a lot of people who think कि भाई minoxidil लगाने के कुछ दिनों के बाद या कुछ हफ्तों के बाद ही उनके दाढ़ी वाली आ जाएगी. Well, nothing of that sort actually happens. Minoxidil takes time to show results, but it do shows results. What you have to make sure about is कि आप minoxidil को consistently दिन रात यूज करो for minimum approximately 6 months or so. उसके बाद ही जाके आपको कुछ solid results दिखेंगे. ठीक है, इसके अलावा आप हफ्ते में एक्सफोलिएशन भी करो जो होते हैं फेस स्क्रब्स, उसके साथ उससे भी जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो ट्रिगर होते हैं और बियर्ड ग्रोथ जो है वो प्रमोट होती है. यूज दीज टू टेक्निक्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ derma roller. इफ यू हैव वन, डोंट वरी, जस्ट यूज इट विद दीज हैक्स. बट इफ यू डोंट हैव वन, डोंट इन्वेस्ट इन वन, जस्ट यूज दीज हैक्स जो मैंने बताए हैं अभी, जो कि हमें minoxidil यूज करो और वीकली 2 बार एक्सफोलिएट करो एंड यू आर सॉर्टेड. इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. इवन बायोटिन का इंटेक भी उतना हेल्प नहीं करता बियर्ड ग्रोथ के मामले में. ठीक है, सो
साफ साफ शब्दों में कहूँ इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि भाई डर्मा रोलर्स या माइक्रो नीडलिंग doesn't very much help with beard growth. It does help with your hair growth on your scalp and it definitely helps with your skin health and all that stuff. लेकिन beard के मामले में micro needling is not that effective. Use minoxidil, exfoliate your skin twice a week and you're good to go. Do this consistently 6 से 7 महीने तक ये hacks को लगातार यूज करो and you will definitely see promising results. So yeah, that's it. I hope this was super fun, super informational and super insightful for you, and I hope I made you guys understand the fact that micro needling or derma rollers are not that effective with beard growth. Okay, so let's catch up next time. Until then, see you soon. Stay fit, stay healthy. Take care. But before then, don't forget to like this video, share this video if you like it, and most importantly, subscribe to my channel so that you would be able to watch more of my content moving forward.